Assalamu alaikum students, I hope everyone is doing fine. Today we are starting off operating systems and computer architecture. As over here, these are two different subtopics: operating systems and computer architecture, taught in several books. They are merged into one. That's why we are doing it in today's topic. So we're starting off with operating system, and the things which we have to go through is the purpose and function of operating system and interrupts and buffers. And there's a note that you're not required to understand the working at this stage. Definition: it is a master controlling program like Windows, Mac OS, Android that runs automatically when a computer is switched on and remains in the background when system is running. Computer system is the most complicated hardware system where several hardware devices work together. अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल आता है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स these all hardware devices to coordinate and work like a single unit. ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम makes या hides या makes transparent the complexity of hardware from user and makes it easy to use and makes it user friendly. Now moving forward, we need to know this definition is basically the purpose of the computer system, and now we will be learning about some functions. Okay, what are the functions which operating system does? So we have, first of all, booting. Booting is starting off computer. Okay. Secondly, we have memory management. Again, ये सारी चीज़ें we don't need to go into detail. We just need to know कि functions हैं क्या. We need to know. We need to memorize them. However, we don't need to go into the details. Next, we have storage management and memory. अच्छा, over here this is a chapter 6 thing, which is your memory devices. But memory management and storage, so basically memory is RAM/ROM, whereas storage is permanent है, जिसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है. ठीक है. देन वी हैव सिक्योरिटी का मतलब वी हैव पासवर्ड्स and user ID. ठीक है. Booting is starting. ठीक है. This is starting of the computer. Then we have communications. जितने भी communications take place करती हैं, this also happens. This is also a function of software. And then we have input and output devices management. अब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि जितने भी हमारे पास, लेट्स सपोज अभी मैं जिस वेकॉम टैबलेट के साथ इसको लिख रहा हूँ, तो मैंने यूएसबी इसके अंदर कनेक्ट की जब इसको, तो उसका एक ड्राइवर था. इसी तरह कोई भी इनपुट या आउटपुट सिस्टम होता है, उसके ड्राइवर होते हैं. तो दिस इज बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स. जिसकी बात हो रही है. देन वी हैव इंटरप्ट्स मैनेजमेंट. अब इंटरप्ट्स मैनेजमेंट ये चीज़ हम लोगों ने थोड़ी डिटेल में पढ़नी है. एंड बफर्स, बाकी हमारे पास जितने विजुअलाइजेशन आता है, बेसिक नेम ऑफ इट. एंड देन वी हैव यूज़र इंटरफेस. और भी चीज़ें हैं, बट आई थिंक इतना काफ़ी है. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर इंटरप्ट्स एंड बफर्स. ठीक है. So let's talk about first buffers.
अब बफर्स क्या होता है, जैसे हम लोग कभी क्या कहते हैं, अक्सर आपने ये टर्म यूज़ किया होता है, यार ये बफरिंग हो रही है या बफरिंग हो रही है व्हाइल यू आर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग समथिंग, राइट। तो ये बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, लेट्स स्टार्ट ऑफ। ऑलराइटी, बफर is a temporary memory used by operating system when the rate of data, this is important, when the rate of data retrieved and the rate of data processing is different, या it is variable, कोई भी वर्ड क्या है। Buffer is a temporary memory used by operating system when the rate of data retrieved and the rate of data processing is different / variable. This is an essential part of modern computers. As hardware devices, this is also important, as hardware devices operates at much slower rate या speed than the microprocessor. अब इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास। अब लेट्स सपोज देखें, हम कहते हैं ना कि जब हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं हम कहते हैं यार ये बफर हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि दिस इज कि डेटा स्ट्रीमिंग इज प्लेड बैक कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। इसी तरह ही होता है हमारा जो डेटा स्ट्रीमिंग है वो कॉन्टिन्यूसली प्ले हो रहा है इवन व्हेन द डेटा डाउनलोड या डेटा रिट्रीव इज स्लोअर देन द प्लेबैक स्पीड, ठीक है। तो ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है जिसकी वजह से हमें कॉन्टिन्यूस डेटा स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है। तभी हम लोग ना थोड़ी देर के लिए पॉज करते थे कि यार ये बफर हो जाए, तो ये थोड़ी टेम्पररी मेमोरी में जितना बफर हो गया। क्यों हो रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि जो डेटा डाउनलोड हो रहा है ना, जो डेटा रिट्रीव हो रहा है वो स्लोअर है प्लेबैक स्पीड से, ठीक है ना। लेकिन वो बफर के थ्रू आपको इस तरह फील हो रहा था कि ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ठीक है। तो इसका अच्छा एक और पॉइंट कि यूज ऑफ बफर्स eliminates data loss और device lagging, ठीक है। और ये एग्जांपल आप अपने पास लिख भी लें, ये जो मैं आपको YouTube या कोई भी स्ट्रीमिंग कर रहा है इसमें लिख लें कि डेटा स्ट्रीमिंग is played continuously even when the data download speed is slower than speed। अच्छा ये डाउनलोड को रिट्रीव पे लिख लो कि आप कंफ्यूज ना, क्योंकि मैंने ऊपर लाइन में रिट्रीव लिखा है। डाउन इज when the data download speed is slower than playback speed, ठीक है। now we have अगेन ये थोड़ा इतने डिटेल नहीं है, छोटा सा सब टॉपिक है इसलिए इसको मेंशन कर देते हैं। सो नाउ वी हैव इंटरप्ट्स। अब इंटरप्ट्स क्या होते हैं? अब बेसिकली इंटरप्ट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक digital signal
which generates by the hardware or software to gain microprocessors attention. ठीक है, तो इसको लिखते हैं कि it is an electronic digital signal generated. अच्छा, एक चीज़ इधर मुझसे मिस होगी कि ये डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। इंटरप्ट जो होता है ये डिजिटल फॉर्म में, तो जबकि ये जो टेम्पररी है ना, दिस इज बेसिकली टेम्पररी फिजिकल मेमोरी, ये टेम्पररी फिजिकल मेमोरी है। और इंटरप्ट जो है हमारे पास वो है डिजिटल, ठीक है, जनरेटेड बाय द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर to gain microprocessors attention. ठीक है, and attention and time to execute their required job. ठीक है। अब इधर ना प्रोसेसर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं कि द प्रोसेसर either carries on with the task it was doing. ये एक सिनेरियो आ गया कि प्रोसेसर ने उनका क्या कहते हैं सिग्नल देखा एंड दे इग्नोर्ड एंड कैरीड ऑन विद द टास्क वो अभी करेंटली कर रहे हैं, या तो और stops to provide service to provide service to the device or program, तो दो ऑप्शन आ गए। द प्रोसेस either carries on with the task it was doing or stops to provide service to the device / program. अब इंटरप्ट्स में क्या काम आया? इंटरप्ट्स का जो सबसे अच्छा काम है, जिसकी वजह से बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस आजकल चल रहे हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स पे, कि इंटरप्ट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि इंटरप्ट्स, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में कुछ ही चीज़ें हैं तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंटरप्ट्स अलाउ कंप्यूटर to carry out multiple tasks at the same time, simultaneously. तो जब एक फंक्शन है ना साइमल्टेनियस, तो एक और फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो वो मल्टीटास्किंग इंटरप्ट अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप डाउनलोड कर रहे हो एक फाइल इंटरनेट से और उसी टाइम पे आप स्पॉटिफाई भी पीछे चल रहे हो, ठीक है ना? तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। आपने लेट्स सपोज आप कोई अपनी गेम की अपडेट आया, अब आप गेम की अपडेट भी कर रहे हो, साथ आप स्पॉटिफाई भी चल रहे हो, तो साइमल्टेनियसली माइक्रो प्रोसेसर 2-3 जगह पे लगा हुआ है। वो किस तरह लगा हुआ है? इंटरप्ट की वजह से लगा हुआ है, ठीक है? और मजे की बात, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि whenever interrupt is serviced, ठीक है, जब भी कोई इंटरप्ट की सिग्नल आया वो सर्विस हो रहा है, जो स्टेटस होता है ना, जो करंट काम जो कर रहा होता है, जो कॉन्करेंट काम होता है, उसको सेव कर लेता है। और वो किस तरह सेव होता है? इंटरप्ट हैंडलर के थ्रू होता है। और क्या होता है, जब सर्विस हो जाता है टास्क, वो उसी जगह से कंटिन्यू हो जाता है प्रायर टू द इंटरप्ट। तो ये पॉइंट्स भी हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं जस्ट फॉर यू गाइस, कि आप लोगों को याद रहे। एग्जांपल, डाउनलोडिंग अ फाइल on the internet while listening
to म्यूज़िक। म्यूज़िक इसलिए लिख लें, म्यूज़िक के आगे आप एक काम करें, फ्रॉम कंप्यूटर लाइब्रेरी कर लें, क्योंकि इफ एग्ज़ाम में आगे यू कैन नॉट राइट स्पॉटिफाई, ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट कंप्यूटर लाइब्रेरी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एग्जाम्पल। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि whenever interrupt is being serviced, the status of the concurrent, the status, give me a minute, okay, the status of concurrent task या activity will be saved via the interrupt handler, and once the task once the interrupt is serviced, the status of the interrupted task, इसको तभी interrupt कहते हैं क्योंकि वो दूसरे टास्क को interrupt कर देता है। तो the status of the interrupted task, सॉरी इसमें एक टी आता है, ओके, interrupted task, once the status of the interrupted task is reinstated and continues from completed from the point prior to the interrupt. ठीक हो गया। अब इंटरप्ट अकर कब होता है, दैट्स ऑल। अब मुझे बताएं इंटरप्ट अकर कब होता है। तो अब एक कुछ सिनेरियोस हम देखते हैं कि किधर इंटरप्ट अकर हो सकता है। तो इंटरप्ट कैन occur for examples हैं, number 1, when the disk is ready to receive more data, दूसरा हमारे पास हो सकता है when क्या करें, हाँ, when an error has been occurred, कोई भी एरर हो सकता है, बट लेट्स सपोज पेपर जैम इन प्रिंटर, ठीक है। और या तो थर्ड सिनेरियो हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर एरर की वजह से, ठीक है, सॉफ्टवेयर एरर की वजह से। अब basically to summarize, interrupts and buffers are often used together to allow standard computer tasks to be carried out.
Alright, so now we are done with our operating system. हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पस एंड फंक्शन की बात कर ली, पर्पस एंड फंक्शन की बात कर ली, और हमने इंटरप्शन बफर्स की बात कर ली. नाउ वी विल मूव ऑन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर.